Hello students, I am Vidya Nikam. Welcome to this channel Maths Vidya. In this lecture, we are going to discuss some of the example which have been already asked in MSBT examination for 4 marks. So this is question we are going to solve here. Given question is given tan of a plus b's value is given to us and tan of a minus b is 8 upon 15. Then what we have asked to find out, we are going to find out here tan of 2a. So to find out tan of 2a, I will write tan 2a. Now we are given these two things, okay? So this angle is tan of a plus b and this is a minus b. And what we have to find out here, tan of 2a. So tan of 2a can be written as a plus a, tan of a plus a, okay? Now what I am going to do here is tan of a plus b plus a minus b. Means I have made one adjustment that I have taken plus b and minus b, because plus b minus b as its value is 0, so that this don't make any difference to this given equation. तो हमने यहाँ पर किया क्या है, प्लस और माइनस b लिया है, ओके? Now if we apply formula of tan of a plus b, tan of a plus b का formula क्या है? Now I will write one formula, tan of a plus b means these are two angles, then tan of a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. This is the formula and our expression is, now what I am going to do, this is our first angle and this is our second angle. I am going to use this formula for these two terms. Means यहाँ पर a is a plus b and b की जगह पे क्या लेंगे, a minus b. So this example becomes, it is equals to tan of a means tan of a plus b plus tan of a minus b divided by 1 minus tan of a plus b into tan of a minus b. Now in this example we have given already values of these terms, so I will just put the values. Tan of a plus b value is 3 by 4, a minus b की value क्या है, it is 8 upon 15 divided by 1 minus 3 by 4 into 8 by 15. So in this way we have come to this step. Now I am going to simplify this term. So what I will do here, I will take LCM of these two terms. So LCM यहाँ पर क्या आएगा, 15 will be multiplied here and 4 is multiplied to 8 and division में क्या आएगा, 4 into 15 is equals to 60. So it is equals to 3 into 15 is 45 plus 4 into 8 is 32 divided by 4 into 15 is 60 whole divided by, यहाँ पर नीचे क्या होगा, now these are numerators, multiplication will be there because there is a multiplication of two fractions. So 3 into 8 is 24, so 1 minus 24 upon 60. So now 45 plus 32, if I take its addition, it will be 77 upon 60 divided by 60 into 1 is 60 minus 24 divided by 60. Now it is equals to 77 upon 60. Now this 60 gets cancelled. 60 minus 24. If we take subtraction, then it becomes 36. So our value of tan of 2a will be equals to 77 upon 36. So in this way we can solve this question of 4 marks. In this example this step is very important, that tan of 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus a, and afterwards what we do, we adjust the b plus b and minus b. In the similar way you can solve this question
Write down this. Now this question is of 4 marks. How to solve this question? In this example, what is given to us? Let's see. In any triangle, we have to prove tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A into tan B into tan C. So I will start with this triangle condition. In any triangle, we know that A, B and C, these are 3 angles of that triangle. Suppose, then its addition will be nothing but 180 degree. Okay, so A plus B is equals to, I can write 180 degree minus C. Now I will take tan angle on both the sides, so I get tan of A plus B is equals to tan of 180 minus C. Now to further solve this question, here tan of A plus B का फॉर्मूला यूज करेंगे. tan of A plus B का फॉर्मूला क्या है? tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B is equals to, now tan of 180 डिग्री, तो यहाँ पर अलाइड एंगल का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस सी लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये तो नेगेटिव होने वाला है. और वंस अगेन इफ tan ऑफ 90 डिग्री इंटू 2 है, यहाँ पर 180 मीन्स क्या है? 90 इंटू 2 मीन्स अगर 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है तो tan का क्या रहेगा? tan ही रहेगा. और इसको कौन सी साइन आएगी? माइनस, बिकॉज दिस एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, tan इज नेगेटिव, सो आई हैव गिवन हियर माइनस साइन. Now what I will do, I will multiply whole term to this side to simplify all this. I will get tan A plus tan B is equals to minus tan C into the bracket. Now this whole term is multiplied here, so I will write 1 minus tan A into tan B. Now simplify whole equation here. Tan A plus tan B is equals to minus tan C will be multiplied to every term, so minus tan C minus minus it becomes plus tan A into tan B into tan C I can write, because this tan C is multiplied to this both the terms. Now this minus will come to this side. I will write tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A into tan B into tan C. So this thing what we have to prove in this example. Write down this. This question is of 4 marks and it has been already asked in summer 19 examination. Now to solve this question, I will start with LHS here. Tan 70 degree minus tan 50 degree minus tan 20 degree. This is LHS. Okay. Now in this example, what I will do, I will take this minus sign outside and I can write in this way: tan of 70 degree minus into the bracket tan of 50 degree, okay, plus tan of 20 degree. Okay. So in this way I can write this equation number 1. Now write down tan of 70 degree. Okay, tan 70 degree can be written as tan of 50 plus 20. Okay, 70 is nothing but 50 plus 20. Now for this I will use tan of A plus B formula. What is the formula of A plus B? Tan of A plus B is given by this formula: tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into
tan B. So it is equals to, just put all these values in this formula and we write tan 50 plus tan 20, okay, is equals to divided by 1 minus tan 50 into tan 20, and it is nothing but equals to tan 70 degree is equals to. Now this denominator I will multiply to this side, so I can write tan of 70 degree into the bracket 1 minus tan 50 into tan 20 is equals to tan of 50 plus tan of 20 degrees. Okay, now if I put tan 50 plus tan 20, you can observe इक्वेशन 1 में कौन सी टर्म अवेलेबल है, tan 50 प्लस tan 20, और यहाँ पर भी वही टर्म हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं. तो ये tan 50 प्लस 20 की ये जो वैल्यू है वो हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं. Therefore इक्वेशन 1 becomes, what it becomes, tan 70 माइनस, और ये पूरी टर्म या पूर्ण टर्मची जी व्हॅल्यू इथे काय आहे ती पूर्ण व्हॅल्यू इथे लिहिणार. सो tan of 70 degree into 1 minus tan of 50 into tan of 20. Then what I will do, I will just simplify all this. So this is LHS, it was our LHS. Now tan 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan 70 minus tan 70. Now tan 70 will be multiplied to both the terms, minus tan 70 into tan 50 into tan 20, and finally tan 70 gets cancelled and minus minus it becomes plus, and finally I can write tan 70 into tan 50 into tan 20, and that is what we wanted to prove to RHS, which is nothing but our RHS. In this way we can solve this question. This question is little tricky. What we are going to do here, minus साइन यहाँ से कॉमन निकाला, ओके, कॉमन काढला, त्याच्यानंतर tan 50 प्लस tan 20 हा ब्रॅकेट मध्ये इक्वेशन बन द्यायचं. त्याच्यानंतर tan 70 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. tan 70 क्या है, tan 70 इज 50 प्लस 20. देन क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है tan ऑफ a प्लस b का, इसका एक्सपांशन करो, ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हाट यू विल गेट, tan 50 प्लस tan 20 की वैल्यू ये फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर देयर. राइट डाउन दिस. Again, one important question is in this way: if alpha and beta both are obtuse angles and given to us is sin alpha की वैल्यू दी है, cos beta की वैल्यू है -4/5, and we have to evaluate cos of alpha plus beta here. So now alpha and beta both are obtuse angle. Obtuse angle means what? They are greater than 90 degree but less than 180 degree. Means alpha and beta are obtuse angle. Means उनका मेजरमेंट जो है वो क्या होने वाला है? It will be greater than 90 degree and less than 180. Means they will lie in which quadrant? In second quadrant. That we have to keep in mind. Okay. Now this example, sin alpha is given to us and cos beta is given to us, and we are asked to find out value of cos of alpha plus beta. So here remember, these are not values of alpha and beta, these are sin alpha and cos alpha. So in order to solve cos of alpha plus beta, now this is a compound angle formula. Cos of a plus b का formula क्या है? Cos a into cos b minus sin a into sin b. So that formula I am going to use here. Cos alpha into cos beta minus
sin alpha into sin beta. Means in this example we have which value? We have sin alpha value and cos beta, but we do not have these two values. Cos alpha की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास और sin beta की भी वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है. तो लेट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो sin अल्फा से स्टार्ट करेंगे. sin अल्फा का यूज करके हम cos अल्फा फाइंड आउट करेंगे और cos बीटा का यूज करके हम sin बीटा फाइंड आउट करेंगे. सो we have sin alpha is equals to 5/30. ओके, आता इथे आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे? sin स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1. ओके, sin अल्फाची व्हॅल्यू काय? 5/30 स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1. ही टर्म या साइडला शिफ्ट केली तर काय होईल? cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1 मायनस 5/30 स्क्वेअर. सो cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 1 मायनस 5 चा स्क्वेअर आहे 25 आणि 13 चा आहे 169. नाउ cos स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169. So cos square alpha is equals to 169 minus 25, it gives you 144/169. Now cos square alpha is, we have got 144/169. Now taking square root on both the sides, what we get? Cos alpha is equal to square root of 144/169. It is nothing but 12/13. So this is value of cos alpha. But we know that alpha and beta are obtuse angle and they lie in second quadrant. And second quadrant में cos क्या है? Negative है. So it will take minus sign as beta lies in second quadrant. This is the reason for this minus sign. So in this way हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू थी, हमने क्या फाइंड आउट किया? cos अल्फा. इन सिमिलर वे अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? cos बीटा है तो हम sin बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ cos बीटा is equals to minus 4/5. So this formula I will write sin square beta plus cos square beta is equal to 1. पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें sin बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा. sin square beta is equal to 1 minus cos square beta. Therefore sin square beta is equal to, I will solve over here. So sin square beta is equals to 1 minus, now cos beta की वैल्यू क्या है? minus 4/5. So minus 4/5 its square I will take. Now it is equal to 1 minus 16/25. Okay. Now sin beta, sin square beta is cross multiplication किया 25 minus 16 divided by 25. Now sin beta, sin square beta is 25 minus 16, it gives you 9/25. और दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? sin beta is equal to square root of 9/25. and 9/25 का स्क्वायर रूट क्या है? 3/5. दिस इज वैल्यू ऑफ sin बीटा. बट sin बीटा को कौन सी साइन रहेगी? प्लस की, बिकॉज sin बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है. सो इट विल हैव पॉजिटिव साइन. सो आई विल राइट sin बीटा इज इक्वल्स टू 3/5. So in this way we have got all the values to put in this formula.
नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज डालेंगे। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, -12/30। आई विल रब ऑल दिस पार्ट, okay, and I will put all these values in equation 1. So cos alpha is -12/13. cos beta की वैल्यू क्या है, cos beta is -4/5. minus sin alpha is 5/13 and sin beta is 3/5. In this way, we have put all the values in the equation 1. Now simplify this. 12 into 4, it gives you 48/65. Minus 15/65. And simplify all this, we get 33/65. This is value of cos of alpha plus beta. In this way we can solve this type of question. So this is all for today's lecture. In the next video we are going to discuss new topic of trigonometry, that is trigonometric ratios of, that is multiple and submultiple angles. In this lecture we are going to study various examples and formulae to find out multiple and submultiple angle formula. If you like this video, you watch, like and share with your friend and subscribe to this channel. Thank you for listening and watching. Bye for now.